National Science Day. So today myself Vivek Sani, I am going to discuss why we celebrate Science Day every year. So Science Day celebrates in memory of Dr. C.V. Raman. So Dr. C.V. Raman have been also awarded the Nobel Prize in 1930 for the same, that is Raman effect. So Raman effect basically deals with the scattering of light. So Raman effect generally describes that Dr. C.V. Raman have described that when the light get incident on some obstacle or a metallic substance, then the radiation will get scattered in different directions. And Dr. C.V. Raman concluded that there will be three types of the radiations. One radiation have the same energy as to the incident radiation. One is having lesser and one is having higher energy as compared to the incident radiation. So ultimately this is a basic origin of the Raman scattering. So ultimately the two lines which are having higher or lower energy respectively are named as Stokes and anti-Stokes line. So Stokes line have rather lesser energy and a longer wavelength, while anti-Stokes line have more energy and a shorter wavelength. So if I go for energy level diagram, I can easily see that in first case Rayleigh scattering, that is only the transitions happening from the ground level to excited level and then again back to excited to the ground level, no change in the energy is being observed. But in second case, the transitions are happening from the ground to some higher energy levels and then from higher energy level to back to the some vibrational states. In this there is a change in the energy is being observed. While in the third case, the transitions being initiating from some vibrational states going to some higher excited levels and then back to the ground states, again there is a change in the energy or the wavelength is being observed. So Dr. C.V. Raman have named these two lines as Stokes and anti-Stokes line. The Stokes line correspond to lower energy while anti-Stokes line correspond to higher energy. So the plot of the intensity versus frequency is also called as Raman spectra, and the instruments being used to determine the scattered light behavior is called as spectrometer. So this is somewhat a basic diagram or experimental setup to observe the scattering behavior, and this is a spectra being observed after the experimental setup. Okay, and this is a spectrometer being widely used in the research purpose nowadays. This is a modern Raman spectrometer designed upon the basic concept of the Raman scattering, and Raman's basic concept is being widely used in the number of applications like determining the structure of the alloys or metals, or purity of the semiconductors, and a number of applications are there. And one widely being used application is for detection of the cancer cells. The Raman effect is also being emerging in the nanotechnology. So in this we can say that especially nanoparticles are so designed that they just target the cancer cells, and
then the nanoparticles get injected into the cancer cells, and when laser light is incident on this, there will be a very distinct Raman behavior. Raman scattering is being observed with the radiations, which clearly indicates a reduction of the cancer cells. So nowadays nano world is also getting merging with the Raman spectra and going to give a very huge number of innovations. So this is all about the Raman effect, and this is all about the Raman effect, and this is why we are celebrating National Science Day every year. This is just a tribute to Dr. C.V. Raman for his great contribution. So this is all about the Raman effect. Thank गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आपको नेशनल साइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नितिन आर से पीजीटी कंप्यूटर साइंस आज के दिन आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका शीर्षक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर कंप्यूटिंग के बारे में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा बच्चों कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। हम हमारे आम दिनों में इस शब्द को बहुत बार सुनते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, व्हाट इज आईटी फील्ड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें दो टर्म्स हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि इंफॉर्मेशन होता क्या है। आज इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। आप जहाँ भी देखेंगे आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे आप रेलवे काउंटर में जा रहे हो, चाहे आप बैंक में जा रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, यू नीड ऑल इंफॉर्मेशंस। तो एक ऐसा तरीका, एक ऐसी तकनीक जो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करे जहाँ से हम उसको रिट्राई कर सकें, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो तकनीक क्या होती है बच्चों? वो तकनीक होती है कंप्यूटर्स। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है बच्चों तो हमारी बात निकल के आती है कि हम हमेशा कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही वो तकनीक हो जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जहाँ से आप ले सकते, कुछ और भी तकनीक हो सकती हैं, बट मेनली जो यूज़ होता है आज के समय में हम कंप्यूटर्स के द्वारा ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैसे हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है, वो तकनीक उसको किस तरह से स्टोर करती है, तो यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्राई, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन। आज विद इन अ सेकेंड हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं नेट के थ्रू। तो यदि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो एक बहुत छोटा सा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन, सर्वर, इंटरनेट, नेटवर्क, सपोर्ट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, डेटाबेस, हार्डवेयर, ये सारे कंपोनेंट्स से मिलकर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनता है जो आपके लिए इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। इन तकनीक का यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन कंपोनेंट्स में से मैं बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इन फ्यूचर जब भी आप इंफॉर्मेशन के बारे में सुने या समझें तो आपके दिमाग और मन में इस बात को ध्यान में कि इस तकनीक के द्वारा हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एग्जैक्टली कैसे मिल रही है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर्स की। सर्वर, जैसे नाम से आप बच्चों देख रहे हैं कि सर्वर जो हमें किसी चीज़ को सर्व करे, दिस इज कॉल्ड अ सर्वर। तो कंप्यूटर कैसे है, इसमें सर्वर क्या होता है? सर्वर इज कंप्यूटर जहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है इन द डेटाबेस, और सर्वर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। क्लाइंट, वी आर द क्लाइंट, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं, तो वी आर द क्लाइंट। व्हाट इज इंटरनेट? यदि आप ध्यान से देखें तो इंटरनेट में आपको दो वर्ड दिखते हैं, इंटर और नेट। इंटर और नेट मतलब ऐसे वर्ल्ड के सारे नेटवर्क जब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर थ्रू द इंटरनेट वी आर एक्सेसिंग एंड वी आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, और
नेटवर्क से मिलकर आपका इंटरनेट बनता है। जब वर्ल्ड के सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इट्स बिकम अ इंटरनेट। अब एडवांटेज क्या हुआ बच्चों इंटरनेट, सर्वर और नेटवर्क का? सिंपल सी बात है कि जब हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा किसी कंप्यूटर पे स्टोर है, सर्वर पे स्टोर है, तो हम कहीं से भी अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आज आप देखते हो कि आप थ्रू द नेट, इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड के किसी भी जगह से या किसी भी प्लेस से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। आप सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेट, नेटवर्क एंड सर्वर, दिस इज ए, we can say this is a technology to generate the information. Now application, what is applications? Applications are the softwares, group of programs जो हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा को सर्वर पर स्टोर करता है। थ्रू द प्रोग्रामिंग, थ्रू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वी स्टोर द इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर से मिलकर वी कैन से कि हमने एप्लीकेशंस डिजाइन किए। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग, दीज आर द एप्लीकेशंस, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जो आपकी हमारी इंफॉर्मेशन सर्वर या किसी कंप्यूटर पे स्टोर कर रहा है और जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह डेटाबेस, जहाँ हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दिस इज कॉल्ड अ डेटाबेस। डेटाबेस इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इन सारी टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। एंड कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं फ्रॉम द सर्वर, फ्रॉम द नेटवर्क। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यदि हम बहुत शॉर्ट में बोले तो ऐसी तकनीक, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे डिवाइसेस, ऐसे हार्डवेयर जो हमारी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जिसमें सर्वर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, हार्डवेयर, ये सब मिलके हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कर रहे हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं ईजिली। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आज हर फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मतलब एक ऐसी तकनीक यूज़ हो रही है जो हमें इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से प्रोवाइड कर रही है। उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम बहुत सारे काम आसानी से कर पा रहे हैं। तो किन किन एरियाज और किन किन फील्ड्स में हमारी इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही है, तो उसमें आप देखिए बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, हर फील्ड में इस तकनीक का यूज़ हो रहा है। एजुकेशन फील्ड में हम देख पा रहे हैं कि हम आज नेट से कहीं भी किसी भी तरह का कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वो क्या है बेटा, वो इंफॉर्मेशन ही है जो कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर है, थ्रू द इंटरनेट हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। बिजनेस फील्ड में आप देखिए कि सारी इंफॉर्मेशंस को सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स करने के लिए उन सारे डेटा और इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर में इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही है। हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर में आप इजीली यू कैन गेट द कि कहाँ पर कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, कहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सी अच्छे हॉस्पिटल्स जगह जगह पर है। यू कैन इजीली गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी, कम्युनिकेशंस में ग्लोबलाइजेशन, आप समझ रहे हो, इजीली किसी भी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट, हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। व्हाट इज दिस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर है, वो थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द इंटरनेट हम उस तकनीक का यूज़ करके इन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो सारी फील्ड्स में आप देखते हो कि
हर फील्ड्स में, हर एरियाज में आज इस तकनीक का यूज़ हो रहा है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों, जब भी आपको ये टर्म समझ में आए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको सुनने में मिले, तो आप इसको ऐसी कल्पना कीजिए कि एक ऐसी तकनीक जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन जनरेट कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही ईजिली विद इन ए सेकेंड। हमें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, रजिस्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम थ्रू द इंटरनेट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्यूचर कंप्यूटिंग बच्चों, फ्यूचर आप समझते हो, अभी तो आपको ये समझना होगा कि फ्यूचर कंप्यूटिंग होता क्या है। फ्यूचर कंप्यूटिंग की इन फ्यूचर हम किस लेवल पर होंगे। Hello friends, I am Shruth Rokde of class 8 presenting an activity to show air pressure. Friends, we often play with this hollow rubber hemisphere. This was invented by Otto von Guericke, a German scientist of 17th century. He invented a pump which can extract air out of vessel. With the help of pump, he demonstrated dramatically the force of air pressure. For that, he took two hemispheres of 51 centimeter diameter and joined them and extracted air out of them and employed 8 horses on both the sides. But surprisingly, he saw that even 8 horses could not pull it. Let us see. See friends, I can't pull this apart. This is because inside the hemisphere there is a vacuum and atmospheric pressure is exerting on both the walls of hemisphere. Therefore, we can't apart the hemisphere. Thank you. Hi everyone, my name is Mohit and I am here to present an activity about pressures in liquid. We all know that solid exerts pressure. Does liquid also exert pressure? Let's do an activity to prove this. Take a plastic bottle and make 4 holes vertically and horizontally. Now add water in the bottle. After adding the water, we will notice that the holes made in the bottommost part of the bottle has this highest angle of the water dripping from it. It is because the pressure in the water. The pressure in this water bottle is at highest at the bottommost part. That's why the water dripping from the last hole is at the highest angle. Hope you understand and enjoyed this activity. Thanks for watching. Hello, I am Riya Bhatia of class 8. Today I am going to do an experiment which we are doing from senior and junior KG. We were thinking that it's a magic, but it's really not a magic. There is a scientific reason for it. We used to rub the scale on our head and the paper attracted towards the scale. So today I am going to do with this pepper powder. Here is 1 teaspoon of pepper powder and I have mixed a little bit of salt, you can tell pinch of the salt with it, and I will rub the scale on my head. You can see that it will attract to it. You can see that pepper is attracted towards it, not salt. This is because of this. Let's do with paper also. Then I will explain the scientific reason. See. So the reason behind it is when we rub the scale, it charged negatively, and the uncharged paper is attracted towards it. This is called static energy or static electricity. This is called electrostatic force also, which come in the category of non-contact force. Hope you like this. This was my science experiment.
Hello friends, I am Sushruth Rokde of class 8 presenting an activity to show combustion process and sudden rise in water due to vacuum. For this I have taken a glass, a candle and some colored water. I have taken colored water for better vision and a matchbox. So let's start the activity. Now I am burning the candle. See friends, now the candle is burning normally, but when I put the glass inverted on the flame on the candle, see it is slowly getting extinguished and the water level is rising inside the glass. This is because the space occupied by the oxygen is taken by water. Thank you. Hello, myself Aradhya. I study in class 3. Today I am going to tell you one experiment. So my experiment is bubble inside bubble. So for that we have to take some hand soap. But here I am using hand soap. But you can use shampoo or dish soap also. Now use some sugar. Now mix them properly. Now here the sugar is melted. So take some soapy water and spread it into the table. Now blow a bubble. Now we have to make one more bubble inside it. In this sequence, we have to make one more bubble inside it. Like this. So now I am going to tell you what is the reason behind it. Bubble form because of water reduced surface tension due to the soap. They like each and they cling together. Soap molecules help them be more stretchy by butting in and decreasing the force of the attraction. Thank you.
hope you like this. Thank you. Hello guys, this is Advitiya from class 12th KV NMU Jalgaon, and today I am here to speak on the topic a look into the future of science, technology and innovations. First of all, don't you think we have already taken a peek into the future? Yes, we have. With all these online lectures, meetings and conferences going on due to this COVID-19 pandemic and lockdown, we have already seen the future. But it was just a glimpse after all. That's why I am here. Today, I am going to give you an idea of what might our future will look like. First of all, I will tell you about emerging technologies in different sectors. So let's start with the healthcare sector. In healthcare sector, some examples of emerging technologies are AI, which is nothing but artificial intelligence. Then we have robotics, nanomedics, cloud computing and 3D bioprinting. Let me briefly tell you what 3D bioprinting is. It uses a digital file as an blueprint to print an object layer by layer. But unlike 3D printing, it uses living cells and organic material to create organ-like structures. Wow! Can you even imagine your heart or your liver or your kidney being synthesized in front of your eyes? No, right? It's truly shocking. Now let's talk about the agricultural sector. First of all, we have soil DNA testing. I'm not stupid. I know soil doesn't have DNA. But here we are talking about testing the DNA of microbes that live in the soil. By testing their DNA, several things about the soil can be crystal clear, with which farmers can select which kind of soil is better for their crops. Now, then the other technologies are laser scarecrow, harvest quality vision and smart sensor. Monitor plant health, soil conditions, then humidity and temperature. Now let's talk about the sector which would have been in a huge trouble without technology today. It is the education sector. Several technologies such as augmented reality, which is also known as AR, help teachers to give students the visual representation of what is being taught in the class, hence helping them to understand the concepts better. Then we have adaptive learning. We know that every student's capability is different, and that's why this adaptive learning is truly important, because it fulfills every student's need according to their capabilities. Then we have some technologies like 5G. 5G, it's the 5th generation, then online course platform and many more. Our India is now emerging as a prominent nation in the arena of science and technology, but there's still a scope for progress. And for this, our government is continuously putting its effort to bring out the innovative minds and provide them a platform to express their ideas. Even our new education policy focuses more on the practical knowledge of things than just reading books and being limited to what's in books and trying to cramming all these things. The children will now get practical experiences of several things, and which would be definitely helpful in the future. But at last, I would like to say only one thing. With this emerging science, innovations and technologies, conservation and sustainable use of our resources is equally important, because the balance between resources and development is what we call real progress. I think now you can imagine what our future might look like. Just try to imagine. It's truly amazing and awesome. Guys, I'm Jay Patil and I'm going to talk about science, technology and innovation. So science, technology and innovation are the key drivers for economic growth and human development. For India to march ahead on a sustainable development pathway, India to include economic development, social inclusion and environmental sustainability for an Atmanirbhar Bharat.
So far, India released 5 science, technology and innovation policies since independence. First was in 1958, then in 1983, followed by in 2003 and then in 2013. And now recently Government of India released 5th Science, Technology and Innovation Policy, which is currently under public consultation. The robotics and automation of all production and business processes is a key global trend in technology development. Robots will take away our usual work. Machines are beginning to do better than humans in many tasks. Self-healing smartphones, asteroid mining for essential minerals, and telepathic brain-to-brain communication enabled by technology. These are some examples of impressive innovations on the horizon presented in the new independent expert report, 100 Radical Innovation Breakthroughs of the Future.